for the office of Vice President, an agriculturist and industrialist by profession. He is admired for his integrity, vision, and unblemished public life. With more than 4 decades serving people on the tarika, Mr. Radhakrishnan reflects service, leadership, and unwavering commitment to the nation. Gurpreet, Akashwani News, Delhi. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the decision of the NDA. In a social media post, Mr. Modi highlighted that in his long years in public life, Mr. Radhakrishnan has distinguished himself through his dedication, humility, and intellect. The Prime Minister added that Mr. Radhakrishnan has always focused on community service and empowering the marginalized during the various positions he was held. PM Modi noted that Mr. Radhakrishnan has done extensive work at the grassroots level in Tamil Nadu and has rich experience as MP and Governor of various states. The Prime Minister further expressed confidence that Mr. Radhakrishnan will be an inspiring Vice President. Meanwhile, the Minister of Information and Broadcasting, Ashwini Vaishnav, also congratulated Mr. Radhakrishnan on being nominated as NDA's Vice Presidential candidate. The Vice Presidential election will be held on the 9th of next month. The Election Commission of India has uploaded the list of 65 lakh voters whose names were removed from the Bihar draft electoral roll published on August 1st after the Special Intensive Revision SIR exercise. The list of voters whose names were included in the Bihar voter list till 2025 but are not included in the draft roll have been uploaded on the official website of the Office of the Chief Election Officer, CEO Bihar. The booth-level officers, with the help of booth-level agents appointed by the political parties and other officials, have prepared the list of voters whose numeration slips have not been received. The notice further says that any dissatisfied person can submit their claim along with a copy of their Aadhaar card. With this initiative, the downloaded list will provide details of excluded elector serial number, epic number, name of voter, relation type, name of relative, old part number, old serial number, age and gender. It also mentioned the reason for their non-inclusion in the 1st August draft roll. The publication of the excluded voters under the SIR exercise in the whole-bound Bihar came after the interim order of the Supreme Court. With Dhanmi from Patna, this is Deepmala Kaushik for Akashwani News. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates from the clock, follow us on our X handle at @AIR News Alert. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Chinese Foreign Minister and member of the Politburo of the Communist Party of China, Wang Yi, will be on a 2-day visit to India beginning today. He is visiting India at the invitation of the National Security Advisor Ajit Doval. During the visit, the Chinese Foreign Minister will hold the 24th round of the Special Representative talks on the India-China boundary question with India's Special Representative Mr. Doval. Dr. S. Jaishankar will hold a bilateral meeting with his Chinese counterpart. Top European leaders will join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Washington today for a crucial meeting with U.S. President Donald Trump as pressure mounts for a swift resolution to the ongoing war in Ukraine. The high-profile delegation includes UK Prime Minister Sir Keir Starmer, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, European Commission President Ursula von der Leyen, and NATO Secretary General Mark Rutte. The leaders are hoping to reinforce Zelensky's position and ensure that any proposed peace terms do not undermine Ukraine's sovereignty or long-term security. Palestinian militant group Hamas has rejected Israel's plan to relocate residents from Gaza City, saying the move constitutes a new wave of genocide and displacement for hundreds of thousands of residents in the area. The Palestinian militant group accused Israel of using the planned deployment of tents and other shelter equipment in southern Gaza as a blatant deception to disguise what it called preparations for a major crime against civilians. On to weather updates, the Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Goa, Maharashtra and Gujarat during the next 7 days. IMD has issued a red color warning for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today.
Continuous rain in Himachal Pradesh and cloudbursts in Jammu region have increased water levels in the rivers, especially Ravi and Bias in Punjab. Villagers living near these rivers and those in Pathankot, Gurdaspur, Kapurthala, Hoshiarpur, Fazilka and Firozpur districts are having sleepless nights. More 20 villages in Kapurthala and Hoshiarpur and about 10 villages in border district Pathankot have been affected due to overflowing of rivers. Hundreds of villagers have been brought to shelter homes and standing paddy crops has also been washed away in parts of both Kapurthala and Hoshiarpur. The concerned district administrations have put senior officials on duty for round-the-clock vigil and have appealed to the residents to move to shelter homes. Meanwhile, Punjab's Water Resources Minister Brinda Kumar Goyal has reviewed the prevailing situation and has instructed to ensure swift mitigation measures and safeguard lives of both people and livestock as well as property. He confirmed that around 14,200 acres of land across Kapurthala, Firozpur and Pagg districts have been affected by flood waters. Rakesh Bari, Akashvani News, Jalandhar. in Maharashtra, heavy rain continues to lash Mumbai, Konkan and Ghat areas for the third consecutive day. A red alert has been issued in Konkan, Mumbai metropolitan region and Ghat areas of western Maharashtra for the next 12 hours. An orange alert has been issued in Palghar, Thane, Mumbai city, Mumbai suburbs, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, Yavatmal, Chandrapur, Gadchiroli districts, as well as Satara Ghat, Kolhapur Ghat. More from our correspondent. Meanwhile, due to rough sea condition and winds are likely to blow at 50 to 60 km per hour, the State Emergency Operations Center advised fishermen to avoid to go into the sea. The Pundarika River in Raigad district has crossed the warning level, while the Budi River in Ratnagiri district has crossed the danger level. The state administration has instructed the National Disaster and the State Disaster Response Force to be alert for emergency situations. Bhavna, Akashvani News, Mumbai. Moving on to the world of sports, star Indian javelin thrower Neeraj Chopra has officially booked his place in the 2025 Diamond League final, set to be held in Zurich, Switzerland on the 27th and 28th of this month. We have a report. Despite skipping on the celestial leg, Chopra's earlier performances were strong enough to guarantee qualification. Chopra set of 15 points from just 2 appearances thanks to his 88.16 meters winning throw in Paris and a national record 90.23 meters in Doha, where he finished second behind Germany's Julius Eber. Both men are level on points, trailing Trinidad and Tobago's Kishon Walton, who leads the standings with 17 from 3 events. In football, the Tourist Cup 2025 semi-finals are set. Eastern Wall edged past our rivals Mohan Bagan Super Giants 2-1 in Kolkata to reach the last four. The 16-time champions now face debutants Diamond Harbour FC, who caused a huge upset in Jamshedpur by beating ISL side Jamshedpur FC 2-0. Switching to tennis, where defending champion Yannick Sinner is set to face Carlos Alcaraz at the Cincinnati Open in what marks their fourth showdown of the year, each coming in a final. Alcaraz claimed wins in Rome and at the French Open, while Sinner answered back with a victory at Wimbledon. In the women's draw, world number 1 Iga Swiatek booked her first Cincinnati final with a 7-1 fight, 6-3 win over Elena Rybakina. She will face either Jasmine Paolini or Veronica Kudermetov for the title tomorrow. With Mayur Jain, Ishati Kiryal, Akashvani News, Delhi. In our bilingual live phone-in program Public Speak at 9:30 p.m. today, we will bring an insightful discussion on safety from vector-borne diseases with Dr. Puneet Mishra, Professor, Community Medicine, AIMS, New Delhi. During the program, the listeners will have an opportunity to ask our experts questions related to symptoms of vector-borne diseases, prevention and cure of such diseases. To participate, simply dial telephone number 011-2371-7117 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards tonight. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 928909444 or post your questions on X with the hashtag AskAIR. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana. Thank you, Pramod. Statesman, in a front page report says PM Modi inaugurates 11,000 crore rupees highway projects in Delhi. In the report, center's GST reforms will benefit poor and middle class, says Prime Minister. The Economic Times reports that big GST cuts may rev up demand for small
Financial Express says government pushing India in to increase global footprint. Election Commission tells Rahul Gandhi to file affidavit in 7 days or apologize to the nation, reports The Hindu. All papers have covered the nomination of Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan as NDA's vice presidential candidate. The Hindustan Times headlines, Mahagav Radhakrishnan to be NDA pick for VP role. And finally, an item in the Indian Express says non-stop is leaving the building with files, stationery and nostalgia. The building is being emptied as part of the government's plan to redevelop the Central Vista area. And with that, it's back to you, Sikho. Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan to be NDA candidate for vice presidential election. Prime Minister Narendra Modi welcomes the decision, saying Mr. Radhakrishnan always focused on community service and empowering marginalized sections of society. The Election Commission publishes list of 65 lakh voters excluded from Bihar draft electoral roll after special intensive revision. Chinese Foreign Minister Wang Yi to be on a 2-day visit to India beginning today. Top European leaders to join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Washington today for a crucial meeting with US President Donald Trump. Star Indian javelin thrower Neeraj Chopra qualifies for Diamond League 2025 final to be held in Zurich on August 27. In the morning news, have a nice day. महाराष्ट्र के राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन राष्ट्रपति जेone राष्ट्रीय लोकतंत्र परिषद के उम्मीदवारों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है कि श्री राधाकृष्णन ने हमेशा सेवा और समाज के कार्यों को बांध करके शक्ति ध्यान देता है। चुनाव कमीशन ने विशेष बिहार की खरड़ा वोटर सूची को हटाए गए 65 का सूची जारी की थी। गुवाहाटी सूर्य विश्वविद्यालय के लगातार कारण पंजाब इस्तारी दुर्गा सरगाम ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। महाराष्ट्र के राज्यपाल C.P. राधाकृष्णन राष्ट्रपति जेone एनडीए के उम्मीदवार होंगे। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रधान के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में पार्टी सुब्रमण्यम की संसदीय बोर्ड की मीटिंग के बाद मीडिया में संबोधन करते हुए ऐलान किया। श्री नड्डा ने कहा कि सारे एनडीए सहयोगियों ने इस फैसले की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सारी पार्टियों नाल तालमेल बनाने का जो उपराष्ट्रपति की चुनाव सर्वसम्मति में करवाई जा सके। श्री नड्डा ने दस्या कि पिछले हफ्ते एनडीए परिवार के विरोधी पार्टियों में इस संबंधी संपर्क किया गया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सुझाव मांगे गए और उसके बाद से ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। श्री राधाकृष्णन झारखंड तेलंगाना पुडुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल बच्चे भी सेवा निभा चुके हैं। झारखंड के चुनाव में सिर्फ 4 महीने के अंदर सारी 24 जिला की यात्रा की थी। जमीनी पद्धति से शासन को मजबूत करने नागरिकों के अधिकार लेने से बेहतर हो चुके। उन्होंने झारखंड की पुडुचेरी के महाराष्ट्र में सबसे सिखा खेले भी महत्वपूर्ण योगदान पाया। तमिलनाडु से तिरुपति में श्री राधाकृष्णन दक्षिणी भारत को उपराष्ट्रपति चौधरी नाम से पहले ओबीसी नेता ने कितने को एक किसान से कृष्णन आपने ईमानदारी दूरंदेशी के बेदार जनपद जीवन में सलाही बांधे हैं। 4 धाम के समेत कई प्रकार तत्वावधान लोगों की सेवा करने वाले श्री राधाकृष्णन की यात्रा सेवा वाले राष्ट्रपति दर्शन लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव अगले की नौत देखने पर कि जगदीप संकट के कारण चोट जरूर हो गई है।
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक जीवन में चापड़े लंबे सालों में श्री राधाकृष्णन ने लोक सेवा के लंबे दौर में चापड़ी समर्थन निमरता के बुद्धिमत्ता रखी आपने लक्ष्य को ध्यान बनाएंगे। वक्त तक औहदे से रहने हुए उन्होंने हमेशा लोक सेवा के समाज से फायदा कमाते वर्ग के शक्तिकरण के ध्यान रखा। प्रधानमंत्री ने के विश्वास प्रकट किया कि श्री राधाकृष्णन एक प्रेरणादायक उपराष्ट्रपति बने। सूचना के प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी श्री राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति को के लिए एनडीए उम्मीदवार चुने जाने की बधाई दी है। भारतीय चोन कमीशन ने 5 लाख वोटरों की सूची अपलोड की थी जिला देना विशेष गैंगसोर एसआईआर अभ्यास के बाद पहले से प्रकाशित बिहार खरड़ा वोटर सूची विचों हटा दिए गए सन। जिला वोटर के नाम 2025 तक बिहार शामिल सन पर खरड़ा सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने सूची मुख्य चुनाव अधिकारी सीओ बिहार के दफ्तर के अधिकारिक वेबसाइट से अपलोड की गई है। बिहार के सीओ दफ्तर ने अपने नोटिस किया है कि वोट पत्र के अधिकारियों में सियासी पार्टियां और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों ने नियुक्त वोट पत्र के एजेंटा की मदद उन्हें वोटरों की सूची तैयार की थी जिला की गणना से प्राप्त नहीं हुई है। नोटिस में कहा गया कि कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की कॉपी देना अपना दावा पेश कर सकता है। इस कार्यक्रम में डाउनलोड की गई सूची में बाहर रखे गए वोटरों के पेज पे सीरियल नंबर एपिक नंबर वोटर का नाम रिश्ता रिश्तेदार का नाम पुराना पार्ट नंबर पुराना सीरियल नंबर उम्र के लिंक शामिल होंगे। चुनाव वाले बिहार में विशेष अभियान से तहत बाहर कटे गए वोटरों का प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को पार है। एक खबर को आकाशवाणी को सुन रहे हो सारा एक्सटेंड है harpreet किया गया न्यूजीलैंड सारा फेसबुक पेज है आरएनए हाइपर किया गया सिलेंडर तो यूट्यूब पे सारा चैनल है harpreet किया गया सिलेंडर। जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश से बढ़ते घटनाओं में हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार मील पैक के बाद क्षेत्र के दरियावा खास करके पंजाब गुजरात के ब्यास दरियावा बीच पानी का खतरा बढ़ गया। इन दरियावा के नेड़े रहने वाले पिंडा के कोटखावा जिले की पठानकोट गुरदासपुर कपूरथला शाहपुर काफिर फिरोजपुर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट कपूरथला के होशियारपुर में 20 पेड़ अगर 37 जिला पठानकोट के लगभग 10 पेड़ दरियावा में पानी का पत्थर बदन कारण कपूरथला के होशियारपुर जिले में कई खान खरीद जो नई फसल रुड़ गई है अगर सैकड़े पेड़ वासियों को 5 लाख कराने से जाना गया है। संबंधित जिला प्रशासन ने सीनियर अधिकारियों ने 24 घंटे चौकसी रही ड्यूटी से लगाया है और वसनीका ने करावे एग्जाम की है। इस दौरान पंजाब के जल स्रोत मंत्री वीरेंद्र कुमार गोयल ने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और रोकथाम उपाय यकीनी बनाओ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,200 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ गई है। राजेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून इजलास पश्चिम बंगाल शुरू होगा। सभा की पहली बैठक 2 बजे शुरू होगी। ये इजलास 2 सितंबर तक जारी रहेगा। इस समय दौरान कुल 12 बैठकें होंगी। विधानसभा स्पीकर ने दस्ते के लोगों की आपदा पर हुए नुकसान से व्यापक चर्चा कर रहे इस बार मॉनसून इजलास में और बैठकों का समावेश किया है। चीनी विदेश मंत्री और चीनी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मेंबर वांगी आज को भारत से 2 दिनों दौरे पर आएंगे। के भारत का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे दौरान चीनी विदेश मंत्री भारत के विशेष प्रतिनिधि श्री डोवाल ने भारत चीन संबंधी मुद्दे के विशेष प्रतिनिधियों की कल्पा से 100वें पेड़ की दीवानी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने चीनी हमदर्द नाते में निमंत्रण करेंगे। केंद्रीय कोयला के खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने दुनिया भर में छोड़ने तब्दीलियां के मद्देनजर उसारी क्षेत्र में सिर्फ स्वदेशी सामग्री की वरतों करेंगे। महासंघ के हैदराबाद प्रॉपर्टी शो बोलकर श्रीमती ने कहा कि किस तरीके से सूचना करते हैं सुरक्षा के सारी कंपनियों और कानूनी के अनुसार काम करना चाहिए। श्री रेड्डी ने सरकार वालों सारे क्षेत्र में खास कर सहायता का भरोसा देता उन्होंने कहा कि बिल्डरों को कराने सारी की गुणवत्ता समझौता नहीं करना चाहिए।
यूरोपीय नेता वाशिंगटन ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਸ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡਰ ਲੈyen ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के वडे व्यक्ति का जिक्र किया है, पर कोई वेतन नहीं दिता। इसमें मामला की भारतीय दिशा पर इतिहास रहना बात नहीं। विश्व चैंपियन अपने 2 बार ओलंपिक तमगा जेतू नीरज चोपड़ा ने इस साल डायमंड लीग फाइनल कुछ आखिरी सांप बाकी कर रही फाइनल tarika में स्विट्जरलैंड की चोरी कुछ होगा। हाल ही में स्पेशल ओलंपिक सलाम लाने के बावजूद 2017 में खिलाड़ी ने इस सीजन में अपनी कारगुजारी लिए क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि नीरज ने अभी तक फाइनल में हिस्सा लेने वाली पुष्टि नहीं की है। आखिर से खास खबरें पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी उपराष्ट्रपति चोने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठजोड़ के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के फैसले का स्वागत किया है। चुनाव कमीशन ने विशेष बहस के बाद बिहार की खरड़ा वोटर सूची को हटाए गए 65 लोगों की सूची जारी की थी। मोहाली सूबे से बदलकर के लगातार कारण पंजाब गुजरात गुजरात हरियाणा में पानी का पत्थर बढ़ा। पठानकोट के कपूरथला की लोकसभा में प्रशासन पूरी तरह चौकस चोपड़ा ने सूर्य पे 27 होने वाली डायमंड लीग फाइनल की शक्ति की थी। इस दौरान खबर जारी बुलेटिन खत्म हो गया। उस चुनाव में दिखाया के बचपन ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। आकाशवाणी एफएम में 106.8 मेगाहर्ट्ज से डिजिटल खबर के वर्ष के चालू में 23 कैंपा तो पेशर प्रोग्राम सरदार बना आगाज करते हैं इस प्रोग्राम का किशोर कुमार से पेश करते हैं इसकी नाम